our focus really on the viral fever, which is suspected to be dengue, a very severe form of dengue, which is killing children. Already over 50 children have died in western UP. 14 adults have also died. The worst hit is Firozabad, and desperate parents are running around trying to arrange platelets for their children. They're seeing their children die in front of their eyes because they can't arrange platelets or blood transfusions. And what's really worrying is that, as usual, in Uttar Pradesh's abysmal healthcare system, that they're running out of beds. In fact, now dengue wards are being made out of earlier COVID wards. Let's just go across to just one situation, because we talk about over 50 children dead. But can you imagine the trauma of each family who's lost a child? In this case, a 6-year-old, a little girl called Pallavi, whose mother describes how her daughter died in front of her. घंटे के अंदर प्लेट तैयार करो, मैं कहाँ से लाऊं? मैं खुदे में लग रहा हूँ, अभी किलो होता है, मैं दे लूँगी ऐसे कौन? हैं? अब ये लोग मेरे बच्चे को ठीक कर दे। ब्लड की कब बोला था, कब देना था ब्लड आपको? आज बोला है अभी। अब तो जेल करते हैं पत्रकार लिए ये देखा। What do grieving parents like this do? Just imagine the loss of a young child. Meher is actually with parents, because we know that hospital beds are running out, there are overcrowded wards, the children inside, the parents outside. Meher, what actually is the situation where you are right now? Yes, Sonia. So I'm at the hospital in Firozabad, which has been designated to treat children who are showing symptoms of dengue or a disease like dengue. So here we've seen inside that all beds are occupied. It's a 100-bed hospital, but it's currently holding over 300 people, many of them children. And inside, hallways, corridors, even storerooms have been emptied out and beds have been put in. So I'm here with some families. There's one son who is 4 years old, is actually in the ward, and the entire family is here to, they're anxiously waiting to know what it's like. So, माता जी आप बताइए, आपके नाती का नाम क्या है? दिव्यांशु गौतम। दिव्यांशु गौतम। तो बुखार कब चढ़ा था उसे? 1 तारीख को चढ़ाया था। वही 1 तारीख को हमने कोरोना वो मतलब डेंगू की रिपोर्ट कराई थी। 1 तारीख को पॉजिटिव भी निकला था वो। हम उसका इलाज प्राइवेट करा रहे थे, तो उसको आज हमने यहाँ के एडमिट किया है और कंटिन्यू रिपोर्ट कराते रहे उसकी। अच्छा, प्राइवेट में से यहाँ क्यों आए? यहाँ पे हम इसलिए आए कि यहाँ पे कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई वहाँ पे इलाज नहीं दे पा रहा है, इसलिए यहाँ पे आए। यहाँ पे जगह खाली थी इसलिए। प्राइवेट में जगह कम है? हाँ, कम है। अच्छा, तो माता जी आप बताइए, आपने तो देखा है कि ये डेंगू की बहुत जल्दी फैला है। हाँ। आपको थोड़ा डर है कि क्या हुआ है? आपका बेटा अभी, आपका नाती अभी अंदर है, कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा है, अभी तो बैठा है बच्चा और अंदर से तो कुछ पता नहीं कैसी क्या हालत है, वो तो डॉक्टर ही जाने। जो मतलब हालत बाकी मतलब ठीक अभी तो दिखाई दे रही है, अंदर की तो पता नहीं। अंदर तो डॉक्टर ही जाने कि क्या परेशानी क्या नहीं परेशानी। तो हफ्ते से ज्यादा हो गया कि वो बीमार रखा है? नहीं, 1 तारीख को। अच्छा, तो जब वो बीमार था आप पर क्या बीत रही थी, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। क्या बीती थी, परेशानी बीत रही थी, दिक्कत हो रही थी कि मेरे बच्चा कैसे ठीक होगा, है जी घबरा रहा था बच्चे की वजह से। ये जो डेंगू है ये मच्छरों से फैलता है। हाँ, आपके घर के आसपास मच्छर की दिक्कत है? घर के पास में एक वो पड़ा है प्लाट किसी का, उसमें घास बहुत खड़ी है, पानी भरा है, उसी के कारण ये बच्चे को दिक्कत हुई है। और उसमें नगर वहाँ पे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी एक है और बहुत सारी गंदगी है, वो सफाई नहीं कर पा रहा है। और ना वो मच्छरों का, ना वहाँ पे कोई छिड़काव हो रहा है दवाई का, ना कोई चीज़ है। So one thing to keep in mind is that dengue and other vector-borne diseases, they are very avoidable. This is a grave public health failure. And we can see the effects of that here. Meher, thanks so much for that report. We can see the crowds of people behind you, all family members who have children inside their wards. And this, of course, coming just after months of COVID. In fact, you had pointed out earlier that many COVID wards are now being made dengue wards. But let's just look at this report which Meher has sent, which brings you what the actual ground situation is.
Crowded wards despite the COVID pandemic, anxious parents, overwhelmed doctors and some severely ill children. At this government hospital in western UP's Firozabad. Where 50 people, 40 of them children, have died in just 10 days from dengue. More and more children are still being rushed to hospitals by parents. Inside the 100-bedded dedicated government hospital treating over 300 of these cases, extra beds have been lined up in the corridors and storage rooms. 40-year-old Kamlesh says she's extremely worried about her 13-year-old daughter Kanyakumari, who has been admitted for 6 days now, with worsening symptoms of dengue like dehydration and blood in her urine. Kamlesh claims the doctors at the hospital want to discharge her daughter to make way for new patients. बुखार नहीं जा रहा है, उसकी प्लेटें गिरती जा रही हैं। कल भी इनने छुट्टी की कह दी, आज भी कह दी। इतनी परेशानी है और बच्ची की इतनी हालत है, खून आ रहा है, पेशाब गिरता। 5 days after Chief Minister Adityanath visited Firozabad and claimed things were under control, more beds and equipment have reached the hospital. But are they enough? Hundreds of patients are coming into the hospital OPD each day, many of them needing hospitalization. The Firozabad DM has even announced plans to have makeshift beds on the streets closer to the homes of those who are not seriously ill. मैंने तो डॉक्टर्स को ये भी बोला है कि वहाँ पे जहाँ पे अपना कैंप उन्होंने लगा रखा है, वहाँ पे 4-6 चारपाई की व्यवस्था वो लोग करें और फिर थोड़ा सा बच्चे की तबीयत ठीक है, थोड़ा सा वैसा लग रहा है, उसको वहीं के वहीं इलाज को मिल जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबको भागने की जरूरत नहीं है। The government of India has sent a team of doctors to Firozabad, but the worry is not limited to one district. 60 kilometers away in Mathura, 15 people, including 11 children, have died in just one village in the last fortnight. The UP government says while a majority of cases and deaths in both Mathura and Firozabad are from dengue, other diseases are involved too. अभी हम लोगों ने देखा मथुरा और फिरोजाबाद में कि डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामले वहां सामने आए और लोगों को बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े। मथुरा में कुछ मामले लेप्टोस्पायरोसिस के भी आए। ये एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में आती। हमें इस समय बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो भी कहीं भी जल जमाव हो रहा हो, खास करके अपने घर के भीतर देखिए। In many districts from western UP to the eastern part of the state, OPDs are teeming with patients, mostly children, suffering from viral fever. And while deaths have not been reported, officials are worried. What makes the situations at these UP hospitals even more heartbreaking is that dengue and other vector-borne diseases are actually largely avoidable. This is a complete public health failure. With Jitendra Kishore and Sushil Rathi, Meher Pandey for NDTV.